Hello, ladies and gentlemen. A very warm welcome to a very special episode of Candid with RMT. Today, I have with me the sitting Vice President of the Delhi High Court Bar Association, Mr. Jatan Singh. Thank you so much, sir. Thank you so much for being on my podcast with Candid with RMT. Thank you, Raghu, having me on your show. It's an absolute pleasure, sir. Let's get the ball moving. This is one question I often ask all the interviewees, sir. What made you choose law? Frankly, if you ask me, I did not choose law, rather law chose me. Like in our times, I think now since coming of 12 plus 5, students are choosing law consciously. But in our time, it was just like one more degree we wanted to do. तो हमने सोचा चलो लॉ भी कर लेते हैं. So this is how I call that I chose law due to default. Like our generation, so many people are choosing law by default. तो हमने कहा चलो ये भी कर लेते हैं. बट जब कर लिया तो उसके बाद फिर जब प्रैक्टिस ज्वाइन की तो उसकी जो लॉ की ब्यूटी है, जो प्रैक्टिस की ब्यूटी है, वो समझ में आई. तो तब से बस इसी में है. That's great, sir. I mean, something similar happened with me also, sir. To be honest, like 12th pass की उसके बाद समझ नहीं आया. Law seemed like a good option. फिर third year से I started doing internships and then I started liking law genuinely. और फिर वो उसके बाद and I sort of never looked back and questioned कि why law, just law. So sir has been active since law school till the point of founding secretary of the Rohini Bar, till the point of vice president of the Delhi High Court. Sir, No, I just correct you, sir. Alright, sir. After passing my law school, I just took a 1 year, almost more than 1 year break, and I enrolled myself in 88. So, and I started my practice from Peace Hajari. They are still, today my seat is there near the State Bank of India. So, I started my practice from Peace Hajari, and to me, Peace Hajari Delhi Bar Association is my mother bar, where I was born and where I was born as a leader also in the bar. So in 88, I started few days with almost about a month with Mr. R.K. Naseem. Then I shifted to one other senior, Mr. K.L. Juneja, who was mainly doing NDPS cases. So then I started my own. I did not take much time with him. तो फिर मैंने अपना शुरू किया. Then 1993, I was first elected as the additional secretary in Delhi Bar Association. Then re-elected. Then in 95, मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ, but I am a giant killer. So I defeated the biggest leader of lawyers, Rajiv Khosla, in 95. Right, sir. So I became the secretary. Then I again became secretary twice. And with me the president was Mr. Ved Prakash Sharma, who is the member of Bar Council of India now. And he defeated for 2 terms Mr. Khosla again on presidency, and Mr. Sanjeev Nasir was a candidate against me in my both elections, and he lost in both elections. So basically, for all political practice, सब purposes के लिए Peace Hajari is my basin. Okay, sir. Okay. So thereafter, when the Rohini was carved out, because some seniors like Mr. Nitin Alawad's father and all, they asked me that you go and contest in Rohini Bar. I said I am not going to do it.
this is my place. They said, no, we are forcing you, Mr. O.P. Verma and all that. So they forced me to go there, and I went there and I became the founding secretary of Rohini twice. Wow. That is a very big resume of bar politics that sir has, and it's very inspiring for young lawyers to actually see and learn so much from a person, from a gentleman who has always been with the bar and who knows what problems the bar face and how to deal with it. सर आपकी राय में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो हर एक बार में कॉमन होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को उनको देख के उन पे इंस्टेंट से इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है बार में किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए वो है मेंबर्स की वेलफेयर. सो मेंबर्स की वेलफेयर में बहुत बड़ा मतलब इससे बिग वर्ड वेलफेयर. So it includes everything. So and we don't have, the bar association do not have that money also, that if a member is in really need, they have to some limited extent that we do it and we help them. तो जो वेलफेयर का मुद्दा है वो वेलफेयर में आप जो है एक बार के मेंबर को क्या दे सकते हैं. आप बार के मेंबर को जब वो नया आता है शुरू में उसको एक गाइडेंस और उसके मतलब वो आया तो उसके कंधे पे हाथ रखा आपने एज ए लीडर ऑफ द बार और मेड हिम अंडरस्टैंड, मेड हिम कंफर्टेबल आल्सो. तो वेलफेयर में यही वेलफेयर है. किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कोई मान लो उसके घर पे प्रॉब्लम हो गई, कोई फॉल्स केस उसके ऊपर हो गया, तो हमारा काम है बार में ऐसे लोगों की मदद करना वेलफेयर में. तो ये हो गया. दूसरा ये है कि सपोज करो जैसे अब हम हाई कोर्ट में हैं तो हमने वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या किया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो एक अलग है, ये तो मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट है टू कीप यू अवे फ्रॉम योर मोनोटोनस वर्क. कोई नया बच्चा आया तो उसको सबसे पहले जरूरत होती है कि प्लेसमेंट की. राइट सर. So in welfare में I think we have in High Court we started with the placement cell. It's still working. Yes sir, I also am part of it. I have made the LinkedIn page for that. So you are a part of it. Yes. So that is one welfare activity which every bar must take it up. Absolutely sir. Because you see, everybody is not a generational lawyer. Yes sir. So person like me, person like you, we are first generation lawyers. So when जब हम कोर्ट में लैंड करते हैं तो सबसे पहले बाहर से भी आते हैं, पूछते हैं किसके साथ काम करें. नहीं मिलता है तो अगर बार एसोसिएशंस के पास ऐसे एवेन्यूज हैं तो ये वेलफेयर की डायरेक्शन में बहुत बड़ी हेल्प है यंगर मेंबर के लिए. उसके अलावा अब जैसे हमने अभी क्या किया कि मैं फर्स्ट टाइम 2014 में इलेक्ट हुआ मैं वाइस प्रेसिडेंट एंड दिस इज माय थर्ड टेन्योर एज वाइस प्रेसिडेंट गोइंग ऑन इन दिल्ली हाई कोर्ट. जब आप बार में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है. तो हमने पहले था कि अप टू 1 to 5 was 100 rupees a month and then 5 to 10 200 and like that it was increasing. Right sir. Now what we did was, because we know that younger member आया है उसको अब जब एडमिशन होता है हमारे तो ऑलमोस्ट 3800 रुपीज नए मेंबर के लग जाते. तो हमने उसको रिड्यूस किया 1 to 10 करके उसको 100 रुपीज कर दिया. तो जो 5 to 10 वाला 200 दे रहा था वो अब कम कर दिया. सो कोविड में आई थिंक we have distributed crores of rupees to members who were in dire need of money and because courts were not functioning. Right sir. They were having no earning. दो बार हमने उसको उनको financial help किया. So this is one welfare which every bar must take it up जब हमारा अपना मेंबर या कोई इसकी नेचुरल कैलेमिटी हो गई है. Absolutely. तो उसको वो बार की तरफ देखता है. हमारे पास फंड नहीं थे लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स दे केम आउट Yes sir, they contributed. and
they helped the bar. Yes. The bar distributed that money, and from bar account also the money went. So this is another welfare. So these kind of welfare activities must be taken up by the every executive committee, which I feel Delhi High Court Bar Association is doing fantastically well. Absolutely, sir. Absolutely, and I mean, kudos to you and your entire team, sir. I mean, you're doing a wonderful job in terms of guiding young lawyers. I personally, जब मैं जाता हूँ हाई कोर्ट और लोगों से बातचीत करता हूँ, there's always a very positive feedback regarding the executive committee and their functioning. So that is a very good job, sir. That the whole of executive committee is doing. Cross examination, sir. That is something that our viewers would like to learn from one of the experts of cross. What are the do's and don'ts, the tips and the suggestions, the feedbacks and the queries of what exactly considers a cross examination, sir? See, the one golden principle cover up my entire submission or whatever I want to say is that the golden rule in the cross examination is that it is not important what you have to ask. It is important what you don't have to ask and where to stop. You can keep on doing cross examination throughout the day, but if you don't ask the witness, don't cross the witness on that element. So then that cross examination for the entire day is meaningless. Right. So you should know where to stop and what not to ask. Wow. So these two principles, ladies and gentlemen, where to stop and what not to ask. Alright, sir. So sometimes in cross examination, you by asking the questions which you don't have to ask to damage your case. Sir, as the Vice President of the DHCBA, running your third term, what are the administrative changes that you as Jatan Singh, sir, of the Vice President of the Delhi High Court Bar Association have made? Even the President or the Secretary or any other member of the Bar Executive Committee single-handedly cannot bring a change. That's true. So, first is you have to have the committee along with you. And secondly, you have to have the members with you if you want to bring a change. Take for the example the cafeteria. So the cafeteria we kept on pursuing the then acting Chief Justice Justice Jatan Singh and other members of the Building Maintenance Committee. And then this also another welfare activity because canteen is one place. Right, sir. So on the administrative side, we request the judges on the bill and Chief Justice. So we brought about the changes in the canteen. We brought out the changes with the help of the High Court administration in the registry, and then we brought out changes on the technical side also. Yes. So these are the things which as a committee member, as a team, we try to achieve. And the motto is the welfare of the bar. Right, sir. Sir has been with the lawyers and the bar members since so long that I have to ask this question, sir. What is that thing, sir, कि अगर आप एक बार की राजनीति में जाना चाह रहे हैं as a young aspirant who is planning on contesting for member executive, sir, in the near future, what are the things that I have to look out for while approaching fellow members, while canvassing for my candidature as well as for the other team players? Shed some light on this, sir. Suppose you are a candidate. Yes, sir. So, someone like, suppose I am helping you in your election. I can help you to an extent. Right, sir. किसी भी candidate को आप
आप जो है मतलब अपनी तरफ से चवन्नी मिला सकते हैं और उसको रुपया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के लिए आप 75 पैसे मिला के उसको रुपया नहीं बना सकते। तो कैंडिडेट हैज टू बी 75 पैसा, he has to have his doings and working. तो सबसे पहला तो ये है कि अपना कैंडिडेचर जो है असेस करके, एक तो वो एक कोई भी यंग मेंबर आना चाहता है, इट्स गुड द यंग मेंबर्स we have in high court we have 5 vacancies always in every election for the executive members, which is more or less all young members contest. दूसरा ये है कि उसमें आप जो है आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप मेंबर्स में और आपका ग्रुप्स में आपकी पेनिट्रेशन होगी और आप उनको जानते होंगे, राइट। सो टू नो personally, like when you met me, yes sir, you told me your name, I am Raghumanyu Taneja, so I told you yes तुम्हारा नाम तो मेरे बेटे से मिलता है, उसका नाम अभिमन्यु है। हाँ जी हाँ जी। So and from that time, from that time I have not forgotten your name. तो जब आप एक मेंबर है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किसी को पर्सनली जानते हैं, उसको नाम से जानते हैं, उसको उसके एसोसिएशन से जानते हैं, तो he adds strength to your candidature because he goes place to place and campaigns for you. तो ये है कि मेरा एक ही प्रिंसिपल है। हाँ जी। वो मैं मतलब तुम्हें भी बताना चाहूँगा, इनकेस अगर फ्यूचर में तुम्हारा मन करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, सबसे मिलो, रोज मिलो और बिल्कुल एक गर्म जोशी और प्यार से मिलो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, बराबर वालों को प्यार से बात करो और सबको पर्सनली जानने की कोशिश करो। डिफिकल्ट है, लेकिन जितना आप जान जाओगे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट लाइक आई एम क्रॉस 60, फिर भी मैं यंगर मेंबर्स में इतना पॉपुलर हूँ, yes sir, because of my approach, because I consider them my younger brothers, my kids, तो सबको मिलता हूँ, सब जो है कभी भी कहीं किसी कोने में खड़ा होके बात कर लो यार जतन सिंह से। तो ये जो आपने अपना अगर मान लो कभी लाइफ में है तो अपने लिए वो बनानी है, 10 जगह जाके खड़े होना है, बात करनी है, उनकी बात सुननी है, अपने बारे में तो जब आप जाओगे पता लग जाएगा। सही बात। तो उनको वही आप ग्रुप्स में जाके उनकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल बात की हो रही है, तो you must be known, because everybody doesn't become known in first election, but when he is thinking of contesting election, he should be a face that bar knows कि हाँ यार ये लड़ रहा है, ये खड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया था। जैसे पीछे इलेक्शन में हमें पता था ये कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कौन जीतने वाले हैं, बिकॉज अब उन्होंने क्या किया, वो जैसे आई गिव नाम नहीं लूंगा, सम ऑफ द मेंबर्स दोज हु मान लो बाहर में मेंबरशिप उस इलेक्शन के दौरान 1-2 महीने पहले आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, एक आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में एन एक्टिव स्टूडेंट लीडर, तो क्या करते हैं कि प्रेशर जब आता है कॉलेज में और कैंपस में, तो ही रिक्वायर सर्टेन हेल्प, तो आप उसको विंडो पे भी ले जाते हैं, आप उसको जो मदद करनी है क्लर्क से वो भी करवाते हैं। तो इस तरह जब आप वहाँ पे नए मेंबर्स बन रहे हैं, ड्यूज दिए जा रहे हैं, आजकल ये बन गया है, बिल्कुल हमारा जो बार ऑफिस है वो लॉ फैकल्टी का काउंटर ही बन जाता है इलेक्शन के दौरान। बट जो मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, अपने लोगों को ढूंढ के पकड़ के लाए हैं, उनको जो मेंबर थे उनके ड्यूज, जो मेंबर मतलब दूसरों मेंबर में खुद ही देने होते हैं, बट उसको एक हेल्प मिल जाती है कि भाई ये रघु तनेजा जो है मदद कर रहा है यार, ये बहुत बढ़िया है, चलो
उसको बोल दिया यार हमारे जो है वो मैं क्लर्क को भेज रहा हूँ, मेरा चेक जो है जमा करना, and you will that person forever. That's true. So that is how you know, one to one, man to man. That's the golden rule for a person who doesn't want to spend money. That's true. In the election. That's true, sir. That's moving on, sir. Technology and judiciary and technology. देखो हमारी तो टेक्नोलॉजी तो कोविड में the entire country judiciary, entire country's bar have come to know that उसके बिना कोई alternative नहीं. And I think High Court, Delhi High Court ने सबसे पहले और सबसे पहले किया और बहुत ही इफेक्टिव और आज भी चल रहा है. आज भी मुझे मेरा एक केस लगा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि फंक्शन के बाद 2 बजे क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाना है तीसरा, तो 12-12:30 बजे उधर से दूसरे लॉयर का फोन आ गया, सर मेरा विटनेस नहीं आ रहा तो आप वीसी पे ज्वाइन कर लेना, मतलब रिक्वेस्ट कर लेंगे. तो ये हेल्प जो है पहले नहीं थी. टेक्नोलॉजी जब जो है वर्चुअल हियरिंग और ये हाइब्रिड हो गया सब जो भी है, तो ये पहले तो नहीं था. पहले तो मुझे जाना ही पड़ता था कोर्ट में. अब मैं यहाँ बैठ के, क्योंकि मुझे एडजमेंट लेनी है और क्रॉस एग्जामिनेशन तो मुझे फिजिकली करना था, लेकिन जब काम नहीं हो रहा तो मुझे एक बेनिफिट मिल गया टेक्नोलॉजी का, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बार ने भी पूरा मतलब जो है उसमें कोऑपरेट किया. और बार ने, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे टाइम के एडवोकेट हैं, दे आर नॉट दैट टेक सेवी, तो उनको भी सीखना पड़ा तो उससे काफी मदद मिली. और हमारा जैसे बार का है तो मैं बता दूं, बार में अब जैसे आप पहले 2016 से पहले अगर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी होती थी तो यू हैड टू कम फिजिकली एंड पे, या आप क्लर्क को भेज दो. आज जो है आप फिजिकली भी आ जाए तो आप अपने कार्ड से स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, जो पहले नहीं किया था किसी भी बार में. सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आप अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. आप ऑनलाइन, आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना ड्यूज है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. तो हमने वो टेक्निकल साइड है उसको वेलफेयर के लिए भी यूज किया. मेंबर को कितनी फैसिलिटीज आया, उसने कहा कितने ड्यूज है भाई, 7,000 रुपए देने, और एक उसको हार्ड कॉपी रिसीट ये वो, उससे उसका छुटकारा मिल गया, सीधा कार्ड से दिया उसका पेमेंट की स्लिप आ. तो ये हमने किया है हाई कोर्ट बार में, अभी किसी दूसरी बार में नहीं है, हाई कोर्ट बार में HDFC बैंक उन्होंने काफी हमारी जो है आज भी जो है मतलब बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है. And I can personally vouch for this because मैंने अपना कार्ड से स्वाइप करके ही अपनी जो सब्सक्रिप्शन ड्यूज थी वो लास्ट ईयर वाली पे की है. So there is someone who is enjoying this system. Definitely. I mean, when there is a system in place, why not enjoy it? Sir, last 2 questions, sir, before we wrap it up, sir. We have touched upon this, but इस पे थोड़ा और चर्चा करना चाहेंगे, sir. कोर्ट क्राफ्ट, जजेस के सामने कैसे एक डेकोरम मेंटेन करना है, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है, पॉज के साथ बोलना है, किस तरीके से पेश आना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? कोर्ट क्राफ्ट जो है ना, एक तो आपको कोई सिखा नहीं सकता. कोर्ट क्राफ्ट जो है एक्सपीरियंस से आप कोर्ट में हैं, आप बैठ गए एक दिन कोर्ट में, या मैं कोर्ट नंबर 1 में बैठूंगा तो हाई स्टेक मैटर होते हैं, तो आप देखते हैं कि पिटिशनर साइड से कैसे बहस हो रही है, उधर से कैसे बहस हो रही है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. सैटरडे मेरा एक मैटर लगा हुआ, सीजन हाई कोर्ट में. I started making my submissions. ऊंचे आवाज में सुने, he's misleading, और मुझे
ये कोर्ट क्राफ्ट का ही है, मुझे बोलने ही ना आते, तो मैंने ऐसे ही जो है कोर्ट क्राफ्ट इसको कहते हैं, मैंने कहा उसका नाम लेके उससे बोलता, you let me mislead the court, you have a right to lead the court later on, but at least give me a chance to lead the court. So this was a court craft by saying, instead of arguing with him, shouting at him, so I politely, then the judge also said, so let him say. So court craft, and I have understood. I'm like person like us, we come from very humble background, village background, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए, अंग्रेजी में हाथ तंग, तो कोर्ट क्राफ्ट जो है अब इतना समझ में आ गया है कि never tell the judge that you have not understood. I've seen lawyers, I think your lordship has not understood. You tell a judge you don't understood is a very poor court craft. You tell the judge, I think, my lord, I am not able to make myself understand and put up my point clearly. Let me reframe my argument. And a poor court craft is that this court does not have powers to do this. Tell a court you do not have powers, then the court will say, okay, I'll show my powers. So you have ways of, making a submission. And court craft is also that what the judge wants from you. Right, sir. It's also something like cross-examination. Right, sir. Keep on arguing. You don't argue relevant thing. So the court craft is short, crisp, and to the point. So, and court craft is also to read your case and read the mind of the court also. That yes, what the court wants from you. और दूसरा फिर कोर्ट क्राफ्ट में हम तो एक सबको बताता हूँ मैं कि अभी इट्स अ लिविंग एग्जांपल we filed some petition which was pending. तो मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंटों को कि भाई देखो, जिस दिन तुम्हारा दिन और किस्मत अच्छी होगी ना, उस दिन तुम्हारा केस जो है एकदम से खत्म हो जाएगा. और वो हुआ 3 साल से पेंडिंग. 2020 में पिटीशन फाइल की. कोर्ट सेड ओके, पार्टीज आई हैं, अब तब तक तो चल रहा था कुछ भी, और 5 मिनट में हो गया. तो मैं बाहर वो सदार थे, मैंने कहा देखो भाई, अच्छा केस, अच्छा वकील, अच्छा जज, जिस दिन सुनेगा उस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए. Then only you. Right, sir. So कोर्ट क्राफ्ट तो सबसे बड़ा जो है, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. Absolutely, sir. Litigation में तो मतलब कोर्ट क्राफ्ट के बिना, no matter how good drafting you do, no matter how research well you do, अगर आप जज को पॉइंट भी कन्वे नहीं कर पाए, तो फिर वो सारा ड्राफ्ट इज गॉन टू वेस्ट ना सर. Yes. तो दैट इज समथिंग. तभी तो फिर सीनियर्स को कोर्ट क्राफ्ट में यही चीजें सीखनी होती. राइट सर. So and court craft में I give you an example. So I was standing counsel 2000 when I was secretary in Roniba. So I was appointed standing counsel for Government of India 2009. Right, sir. So from 2006 I was standing counsel for AICT. So more or less 5-6 I shifted my base in High Court. So we were doing a case in court number 1. I was briefing the ASG. So my ASG, I will not name it. My ASG was saying it was a challenge to some ordinance. So the court said, no, you don't have a case.
So he tried. Ultimately, what happened the day it was urgent. Then we brought the attorney general, and the attorney general with his court craft said the same thing which the AIC was saying, and his arguments were accepted. Wow. His arguments were accepted, and that petition was dismissed, which was so court craft. Once even sometime you are on a weak wicket, but if you are having a good reta shape, good court craft shape, you win the weakest of the cases. Right, sir. Very profound saying, sir. Last question, sir. Mediation as a means of ADR. अभी recently mediation law pass हुआ है, sir, which makes it binding as a concept. And arbitration award and mediation की जो award है that is same as a court decree. क्या लग रहा है सर आने वाले टाइम में will more people accept mediation? क्योंकि arbitration तो चलो लोग तब भी accept कर लेते हैं because it's been there for years and people know कि चलो arbitration is almost as like a court only. But mediation, sir. Mediation में क्या? You asked a very good question. I myself is a trained mediator of Delhi High Court Mediation Center, and fortunately, I am being a vice president. I am a member of the overseeing committee, which look after the affairs of the Mediation Center of Delhi High Court. So, Delhi High Court Mediation Center is one of the best in the country. Right, sir. And this private bill is, I may not like it, but that is being passed to help the organizations or the entities which are beyond the court mediation center. So they can also become, the court disputes can be referred to them by the courts. I don't know how many courts would rely upon private. Right. This is the Delhi High Court Mediation Center is run by the lawyers and supervised by the judges. So, so far as the scope is concerned, I must tell you that Delhi High Court Bar's Mediation Center receives hundreds of pre-litigation petitions, which are not even referred by the court. They come and choose mediation as an alternative dispute resolution mechanism, and they come and say that we want to, go into pre-litigation mediation and want to settle our dispute. So it's not that court is only referring, parties are coming. So the mediation is one mechanism which has become very popular and helping the litigants also. Right, sir. So you do see that there is a future. Yes, in mediation is the future. Mediation is the future. Mediation, we don't discuss our cases, but I have also settled disputes which were really parties were loggerhead. They never want to see eye to eye to each other, but उनमें भी बैठ के जब आप जो है उसको अपनी मीडिएशन की स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं और जब पार्टीज को उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्प्यूट्स को सुनते हैं तो देयर इज अ रेजोल्यूशन, ऐसी बात नहीं है. तो मीडिएशन इज गोइंग टू बी द थिंग इन फ्यूचर. Right, sir. Any, sir, parting last few pearls of wisdom, sir, which you like to give to our audience?
See, pearls of wisdom. So I am not somebody who can give wisdom, but the legal fraternity. As a leader, I will say that uh, your future is safe with people like us. We are always there for you. And as for lawyers, I will say read and do hard work. The result will follow. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on this podcast, sir. Really means a lot, sir. Thank you.